Smith is there, and some Nair. He also new to us today, I think. Just a minute. I have to receive just a minute. A call is there. Very important. And Baldy, your microphone is on. Prakash sir, your voice is not coming. Rakesh sir, you are not Left audible. parent outside in right parent joined. Hello. And Baldy, Yes, you have sir. post grad. Yeah. Just a minute. Yes, sir. Now you are audible. Critical data Uh, left parent outside in right. so whether my slide is The visible already. now? Anyone, please respond. Hello. Hello, sir. Good evening. Good evening. Actually, due to some technical glitch, actually, it was disconnected. So, uh, just a minute. I am presenting my slide. It's like, yeah. Anyone, please respond whether it is visible to you. Yes, sir, it is visible. Okay. Okay. So, yesterday, actually, what we did, we discussed about some uh, application of remote sensing GIS and overview, what are the application and how it is useful. That means in a very broad sense, actually yesterday we had the discussion whatever we did yesterday. So from today onwards, based on your syllabus for IGNO, we'll try to have the discussion on the basis of your syllabus. Okay. So like you can see that the geoinformatics, its introduction, then we'll talk about the multidisciplinary nature of geoinformatics, how different subjects are interrelated, and how in geoinformatics we are uh, studying different different type of
subject, and how the technology can be useful by different topics, and also different subject matter specialists, and also different academicians from various subject, how it is useful for them. So uh, see, in this slide you can, whether it's changing now. Anyone please respond whether the slide has been changed. Yes, sir. Yes, sir, it's changing. हेलो, स्लाइड चेंज हो रहा है नहीं? Yes, sir. हो रहा है सर. हो रहा है ना? और ओके, तो कल जो हम डिस्कस किए थे ना, उसका थोड़ा सा मतलब डिटेल है कि मतलब क्या क्या चीज़ में मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर क्यों है, व्हाई जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज वेरी मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर. And one thing actually, last yesterday I told you to share the yesterday slide presentation along with some of the PDF and some books. Actually, due to official work, actually today I have forgotten. But after today class, definitely I will be sharing in that dedicated group. Okay, so what I would like to say ki, like as nowadays the role of geoinformatics is rapidly increasing, and we are integrating different type of technology. So in those technology, very vital are like GIS. So you all know about what is GIS, Geographical Information System. And also in our coming topics also, we will be briefly we will be discussing about what is geospatial data, and what are different types of data are used in GIS, and also what different type of analysis tools that we basically use in GIS. So, and why it is very important now, like it gives us a platform where we can integrate different type of technology, and we can analyze the data, we can manage the data, and also we can visualize the data. Data obviously, it may be like okay, anyone can you say the what are the basic types of data in geospatial science? Anybody? So spatial and non-spatial data. So, what is spatial? What is non-spatial? Along with example, can you give us? The spatial denotes basically the location on the earth, that have Mm, the mm. latitude or the longitude, any Yes, place yes, yes. that Mm-hmm. has the address. And non-spatial is basically the properties of any feature. Yes. See, for example, your center, IGNO center. So, what is the coordinate of IGNO? Where it is located actually? Geospatial science is nothing but a science of where. कहाँ पे है वो, उसका लोकेशन क्या है. सो दैट इज द स्पेशल लोकेशन. बट जो इग्नो जो है वो कितने एरिया में इट एक्सटेंड करता है, और उसका हाइट कितना है जो बिल्डिंग्स है, और हाउ मेनी क्लासरूम्स आर देयर, और कितने एकेडमिक काउंसलर हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं. तो ये जो है दीज ऑल आर एट्रीब्यूशनल डाटा, और वी से इट एज नॉन स्पेशल डाटा. So in remote sensing we are, or in geoinformatics actually, it's all about the geo, that means अर्थ के बारे में और उसका डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे. तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में स्लाइड, अगर स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है तो आप कोई भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है. तो अभी इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट नो डाउट आई हैव टेकन वेरी फ्यू एग्जांपल. तो ये एग्जांपल को छोड़ के भी और सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर where there is a multidisciplinary nature, like here geography is there. So in geoinformatics, how it is integrated with the geography, like in geography now what we are utilizing the geographic data, and also we are analyzing those data, and also different type of spatial patterns. What do you mean by spatial patterns? Means suppose there is a region is there where a hilly terrain is there, then a slope is there, whether it is a steep slope or it may be a like very uh, even slope, or it is flat one. So these type of all terrain features can be processed, or terrain feature can be हम उसको
मतलब पता कर सकते हैं कि किस टाइप का पैटर्न है, क्या है। देन सी नाउअडेज जो डाटा हम ले आए बट उसको विजुअलाइज करना है, उसको प्रोसेसिंग करना है, तो मेनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस करना है। देन लाइक सम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आर देयर. So all in these technique actually the role of computer science is very important. And you know nowadays the very rapid use of AI ML, always we all say that AI यूज हो रहा है, ML यूज हो रहा है, your deep data learning ये सब यूज हो रहा है. तो nowadays it is very speedily actually it is increasing. Then another example कि environmental science. सो एनवायरमेंटल साइंस मीन्स हियर हम लोग क्या है कि एक नेचुरल चीज़ है, उसको एनवायरमेंटली हाउ इट इज इफेक्टेड, और ड्यू टू एनी लाइक इंसिडेंट, सपोज एक जगह पे कुछ बर्निंग हो गया, तो वो बर्निंग जो है, सपोज कुछ फॉरेस्ट फायर हुआ, तो उसके वजह से व्हाट टाइप ऑफ इम्पैक्ट हो रहा है, आपका एयर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसका मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो ये सारा चीज़ हम इसमें इंटीग्रेट करके हम लर्न करते हैं या एनालिसिस करते हैं. ओके. देन अभी एक मतलब सम इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हम स्पेशल डाटा को कैसे एक्वायर करते हैं, हाउ डू वी गेट दोज डाटा, लाइक you know the very first one is remote sensing. So we are having different type of satellites, different sensors are there, so they are capturing the data in different wavelength. As yesterday we talked about different bands. Then those data are processed, then we are using as a in a in a bottom or in the end user, actually we are using those satellite data, remote sensing data. Then in second we can say that geographic information system, GIS. So how in GIS it is useful, like suppose you are having a satellite image and you don't have any software to use that, then it is useless na. That's why we need some sorts of a software in order to visualize those data, in order to analyze those data. That's why the role of GIS is very important. एंड सी रिमोट सेंसिंग हो गया, आपका जीआईएस हो गया. जीआईएस में क्या है कि जो रिमोट सेंसिंग डाटा है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और विजुअलाइज करते हैं. जैसे कोई एक जगह है, उसी जगह का कैसे हाउ इट इज इवॉल्विंग इन कोर्स ऑफ टाइम, इन लास्ट 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, हाउ इट इज चेंजिंग, वो कैसे चेंज हो रहा है. तो दिस थिंग्स कैन बी मैप्ड, हम उसको मैप कर सकते हैं कि 50 में कैसा था, 80 में कैसा है, अभी कैसा है. तो ये यहाँ पे जेएस का यूज हो रहा है. देन जैसे हम कल डिस्कस किए थे कि व्हाट एवर वी आर डूइंग in our lab, we are not 100% sure that it is correct. That's why we need to have some ground truth collection or field data collection. So I can say that these three are very important in geoinformatics: remote sensing data, satellite data, then GIS data, then the verified data, that is the field data collection or through ground truth collection. Okay. Then we actually in course of time, like in your block 2 also, in that data analysis tool, we are going to talk about the some geospatial data analysis tool, and we'll be talking about some raster data, vector data, और कुछ मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या, मतलब डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे बट ओवरव्यू है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका यूजफुल होता है. जैसे पाइथन है, तो ये मतलब आपका आज की ट्रेंड में ये सब थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होना ही चाहिए. सपोज सी अगर आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है तो यू कैन डू बेटर इन प्रोग्रामिंग, बट आज की डेट में ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एआई, मैं एआई की ही पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, आजकल यू डोंट नीड टू बी ए, आपको कोडिंग खुद नहीं लिखना पड़ेगा, आपको मिल जाता है ना, कोडिंग मिलता है ऐसे ही. बट थिंग इज दैट कस्टमाइज in a customized way, how you can use that, and how like by using Python and Google Earth engine and some other things are there. Then जो स्पेशल डाटा को कैसे आप आपके यूज में ले रहे हो बाय द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एआई. तो ये सारा चीज़ अभी वेरी वेरी एसेंशियल है. देन स्पेशल स्टैटिस्टिक्स, ये जो सारा वट एवर डाटा यू हैव गॉट फ्रॉम द
your survey or any way or any source, from any source, if you are getting those data, then you can go for some statistical analysis, कैसे पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, कैसे, और व्हाट आर द रीजन फॉर दैट, तो ट्रेंड क्या है, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं. देन यू कैन डू सम सॉर्ट्स ऑफ सिमुलेशन और सम सॉर्ट्स ऑफ स्पेशियल मॉडलिंग. यहाँ पे सिमुलेशन कैसा है, और लाइक सॉर्ट्स ऑफ प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड. अभी कोई बता सकता है कि how in remote sensing and JS how we can do a simulation model, मतलब एक एग्जांपल आप anyone आप दे सकते हो, anyone? क्योंकि मैं बोल दिया कि सिमुलेशन होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो सकता है. anyone? I think music is life. Can you explain ki what type of simulation actually you will be you are going to be interested for that by using GIS modeling and programming language and so many sources are there. आप बता सकते हो कैसे आप उसको एक मॉडल सिमुलेशन या कुछ प्रेडिक्टिव मॉडल कैसे आप ले सकते हो? हेलो, गुड इवनिंग सर. हाँ आप बोलिए ना, आपको मतलब कैसे ये रिक्वायर्ड हो सकता है मॉडलिंग का? हेलो, सर मैं अभी ऑफिस में ही हूँ अपने. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. और कोई राघव, आप बता सकते हो हाउ इट इज यूजफुल फॉर यू? नहीं. और कोई है, मनीष कुमार या फिर रितिका भटिया? हाँ सर, ऐसा हो गया. हाँ हाँ भाई मनीष. सर मैं कह रहा हूँ, आई डोंट नो सर, आप बताइए. क्या हुआ? मैं कह रहा, आप बता दीजिए सर. आप काम कर रहे हो उधर? हाँ सर, मैं अभी थोड़ा यहाँ पर अपना घर पे काम कर रहा हूँ सर. अच्छा, हर कोई तो मतलब कोई दिक्कत नहीं सर, एक्चुअली आप एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा. ठीक है ठीक है ठीक है, चलो. अब जैसे सपोज आपको एक सिचुएशन है कि आपका जो सी लेवल राइज हो रहा है, या फिर मान लो आपका कुछ साइक्लोन का प्रेडिक्शन है कि भाई आपका ये जगह पे साइक्लोन जो है आके लैंडफॉल हो सकता है. या फिर एक एग्जांपल है कि जैसे सपोज एक बड़ा रिजर्वर है, जैसे हीराकुद है उड़ीसा में, या फिर ऐसे बहुत सारे रिजर्वर्स हैं. तो ऐसे उसका जो वाटर लेवल है ना, अगर वो बढ़ रहा है, तो हम ऐसा एक ये मॉडल कर सकते हैं कि अगर इतना वाटर लेवल बढ़ेगा तो उसका जो कैचमेंट एरिया है, या फिर जहाँ पे वो जो रिवर फ्लो हो रहा है, तो कहाँ तक एक मतलब पानी कहाँ तक जा सकता है. ओके, तो इस टाइप का सिमुलेशन हम कर सकते हैं कि अगर इतना सेंटीमीटर पानी अगर होता है, तो व्हिच आर द विलेजेस और व्हिच आर द ब्लॉक्स, कौन कौन सा लोकेलिटी दे कैन बी लाइक सबमर्ज हो सकता है, वहाँ दे कैन बी इफेक्टेड. तो ये सब चीज़ वी कैन डू इन बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स अवेलेबल इन GIS फील्ड. ओके, देन अभी अगर हम बोले कि अभी जैसे व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स नाउअडेज, लाइक we all talk about artificial intelligence. Here AI algorithms are used for ऑटोमेटेड वे में कैसे हम उसको डाटा एनालिसिस करते हैं. देन लाइक सम predictive models are there. See, for any region, if you have the data of like 30 years back data, then the recent one, then based on that you can predict ki after 20 years or after 30 years what could be the scenario. That is easily very easily by using artificial intelligence it can be done. Then in data nowadays, the use of data is very very important, and I can say that in each and every sector the use of data is very essential. So thing is that how to handle and how to analyze the massive data set. For example, suppose you are having the data of a village. Okay, ki in that village how many male are there, how many female are there, and old age person, and so many things are there.
But if I say कि you are having the data of a total state like Odisha or Madhya Pradesh or Rajasthan, whatever, so in that case it is very difficult to uh, handle those very massive data set. So that actually the big data analytics play a very vital role. Then क्लाउड कंप्यूटिंग नाउअडेज सी ऐसा होता है कि हम लोग छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम गूगल ड्राइव में हम बहुत सारा चीज़ को सेव कर लेते हैं। अगर हमारा लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में अगर हमारे पास वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस, देन वी कैन स्टोर आवर डाटा, वी कैन ऑल्सो प्रोसेस द डाटा लाइक इन GEE, जो गूगल अर्थ इंजन में जो कोई भी आप लोग यूज कर रहे हो, सो यू नो बेटर कि हाउ टू प्रोसेस योर different type of analysis by using cloud computing. Then in 3D visualization, ये बहुत important है because any any landscape or suppose one like Himalayan range is there or any mountain are there. So if you are able to visualize it in a 3D way, and definitely you can plan very in a very smart way in comparison to the person who is having the data set in a two-dimensional picture. Okay, so in this way also these are the emerging technology. So these technology are like integrated with geoinformatics, and we are getting very good result in terms of our research, in terms of our application. Then यहाँ पे थोड़ा सा एक दो एग्जांपल मैं दिया हूँ कि जैसे अर्बन प्लानिंग में कैसे हाउ इट इज यूजफुल, लाइक सस्टेनेबल सिटीज़ कैसा है, और जैसे आपका लिविंग सिटी आज की डेट में ये एक चलता है कि लाइक एक सिटी किस टाइप का होना चाहिए, और मैं भी एक सिटी है तो उसमें लाइक ड्रेनेज का कुछ इशू है या फिर ओवरबर्डन ऑफ पॉपुलेशन है, आपका एयर पोल्यूशन है, तो ये सब चीज़ में वी कैन यूज द डेटा सेट फॉर बेटर प्लानिंग पर्पज. Obviously I will not talk about the environmental management, you know about it. Then obviously in agriculture and health sector also the role of geoinformatics is very important. Then in this slide actually these are the broad, or I can say very vast application of remote sensing. Yesterday just we had like for 1 or 2 minutes we discussed about this particular slide. So now actually we'll talking in very briefly, like in agriculture, forest, water, disaster management. In disaster management like flood damage assessment or any type of disaster management after disaster. So remote sensing play a vital role. Then in ocean application are there, coastal zone mapping, then potential fishing zone, कहाँ पे आपका फिश हो सकता है. ओके, ये भी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन बाय यूजिंग आपका रिमोट सेंसिंग का जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट प्रोडक्ट से इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपका पोटेंशियलिटी ये जगह पे बहुत सारा मछली मिल सकता है. सो इट इज यूजफुल फॉर द फिशिंग कम्युनिटी, जो आपका फिशरमैन कम्युनिटी होते हैं उनके लिए इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल. तो वो क्या करते हैं, उनको वो कोऑर्डिनेट्स मिलता है, ये जगह से ये जगह तक देयर इज ए चांस ऑफ गेटिंग मच फिश, तो वो वहाँ पे जाते हैं. और ऑब्वियसली इन वेदर एंड क्लाइमेट द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इज वेरी इंपॉर्टेंट nowadays. Like the urban heat island concept is very, now it is very popular. So this year and last year also कितना गर्मी बढ़ रहा है, तो what are the causes for that and how our city can be sustainable, हम उसको क्या कर सकते हैं. तो ऐसे चीज़ में भी हम we can use the satellite data and also GIS. बट थिंग इज दैट हम ये सब यूज कर रहे हैं, बट थिंग इज दैट उसको वी आर हैविंग some challenges are there, and also along with some opportunity are there in this field, like data privacy. ये सब क्या है ना, suppose someone is working in in a sensitive organization whose data is very like
if someone is working on a defense sector and some other sector, so the protection of data is also very important. This is a very challenge, I can say. Then डाटा इंटीग्रेशन, इसमें क्या, अच्छा कोई बता सकता है कि व्हाट डू मीन बाय डाटा इंटीग्रेशन? आप डाटा इंटीग्रेशन क्या समझते हैं आप? हाँ, यशपन यशपल सिंह जाला, आर यू देयर? यस सर। आप बता सकते हैं कैसे, मतलब ये क्या डाटा इंटीग्रेशन मतलब क्या समझते हैं आप? तो आइडिया नहीं है सर ना ज़्यादा। आइडिया नहीं है? जी सर। आप क्या करते हैं, मतलब आप मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? सर यहाँ पे अभी मेरा जॉब स्टार्ट है सर, जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ कहाँ पे? पे। ये अपने वाइल्ड लाइफ डिवीजन सासनगीर गुजरात जूनागढ़ सर, ये गिर अच्छा में। अच्छा अच्छा, कल कल थे आप, कल बता रहे थे नहीं? जी सर। तो मतलब डाटा इंटीग्रेशन आप मतलब क्या समझते हैं? ऐसा है कि देखिए, सपोज आप जैसे वाइल्ड लाइफ में आप काम कर रहे हो ना, तो अगर आपका कुछ जैसे हैबिटेट्स है, नेचुरल हैबिटेट्स, आपका कोई मतलब जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल सम फ्लोरा फोना का है आपका, जैसे कोई आपका, मुझे पता नहीं आपका वहाँ पे क्या मतलब प्रोमिनेंट कुछ बर्ड्स हैं या फिर कुछ एनिमल्स हैं, तो उसका डाटा है आपके पास, ठीक है। और उसके साथ क्या है कि सपोज आपके वो वाइल्ड लाइफ एक रोड, आपका जो रोड डिपार्टमेंट ना, रोड डिपार्टमेंट वांट्स टू मेक ए रोड देयर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उन लोग ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, दे नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जब वो रोड बनाएंगे, बिफोर दैट दे नीड टू नो अबाउट द टेरेन फीचर ऑफ आपका एरिया जो है ना, उसका एरिया का कैसा टेरेन है, मतलब कितने आपका जो टर्न रहेगा वहाँ पे, या फिर कितना अल्टीट्यूड में है, वेदर इट इज फ्लैट एरिया है या फिर वो कुछ मतलब सॉयल कंडीशन क्या है उसका। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक मतलब आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल इन योर जॉब एक्चुअली है। सो एम आई राइट, और यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि आप और किसी वे में इसको आप यूज कर सकते हो? यस सर। मैं एक्चुअली क्यों बार बार आप लोगों को पूछ रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे ओर से एक वन साइड ट्रैफिक जैसे मैं ऐसे बोलता रहूँ, आप लोग आई डोंट नो आप लोग कैसे इसको ले रहे हो, बट मतलब ऐसे होता है बहुत टाइम कि हम रख देते हैं, कॉन्फ्रेंस ये सब चलता रहता है और जब खत्म होता है तो बंद कर देते हैं। ऐसा हुआ तो कुछ मतलब ही नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोगों से देखो, अभी 10-12 लोग ही हैं, तो ये जो 10-12 हैं आप ट्राई कीजिए, अगर कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है, कुछ चीज़ में आपको रुकावट फील हो रहा है या कुछ कुछ है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बिकॉज फिर क्या होगा ना, वो चीज़ को हम अच्छे से समझ पाएंगे और आप लोग इसको याद रह जाएगा आप लोग को। इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ, ठीक है। चलिए, अभी जैसे थर्ड वन क्या है, एक्सेसिबिलिटी। अभी क्या है, एक्सेसिबिलिटी ऐसा है कि आज की डेट में स्लोली एंड स्लोली वी आर एबल टू यूज द रिसोर्सेस, एंड ऑल्सो नाउ तो रिमोट सेंसिंग जीआईएस क्या है, अभी धीरे धीरे बहुत ऑडियंस के पास पहुंच रहा है। नाउ इट इज रीचिंग टू द एंड यूजर। सी अभी लाइक अर्लियर क्या है कि बहुत कम लोगों को रिमोट सेंसिंग जीआईएस पता होता था। अभी क्या है कि एक पर्सन इफ इज ए डॉक्टर देन ऑल्सो वेरी लिटिल बट ही और सी नोज अबाउट जीआईएस। जीआईएस क्या होता है, कैसे स्पेशल डाटा यूज होता है। ऐसे अभी अभी हम आप लोगों के साथ भी कोई डिफेंस से है, कोई जॉब कर रहा है, कोई ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, कोई और जियोलॉजी है, कोई एनवायरमेंटलिस्ट है, तो अलग अलग ऑडियंस के पास नाउ इट इज रीचिंग। Then obviously in education and training, the in like आज की जो डिमांड है, जैसे अभी मान लीजिए ऐसा है
कि someone knows only one RJS सॉफ्टवेयर, आपका JS सॉफ्टवेयर एक पता है, but he does not know about the AI, then he will be facing issue, because nowadays due to the demand of AI, when we couple AI along with JS, at that time we will be able to get the more data and more type of analysis can be done. तो ये हो सकता है, तो ये सब चीज में we need to upgrade ourselves. Then अभी फ्यूचर ट्रेंड में क्या हो सकता है, आपका एक टॉपिक में इसमें था कि फ्यूचरिस्टिक का कुछ था, इसमें आपका ट्रेंड क्या है, रिसेंट ट्रेंड क्या है, फ्यूचरिस्टिक में किस टाइप का चीज़ होने वाला है. तो इसमें हाउ व्हाट आई थिंक कि देर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग. अभी स्लोली इंक्रीजिंग हो रहा है और आगे ये बढ़ता जाएगा. देन एडवांस 3D विजुअलाइजेशन एंड वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन, इसका भी बढ़ रहा है धीरे धीरे और तेजी से बढ़ेगा. देन इंटीग्रेशन विथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइसेस. किसी को आइडिया है IoT डिवाइस क्या होता है? नहीं, चलो. अभी डेवलपमेंट ऑफ जो स्पेशल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये मुझे लगा कि ये जो 4 फील्ड में ना अभी हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स का और ज़्यादा आगे इंक्रीज होने वाला है. ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़े इसमें रिमोट सेंसिंग के बारे में ज़्यादा था. तो यहाँ तक अगर anyone you have any doubt or you like to ask something, you can ask me, because after this slide actually we will be talking about some uh, GIS related things, because in your syllabus na, like after multidisciplinary and recent traits, in the block 2 actually we are going to talk about the geospatial data set, geospatial thing. That's why I'm trying to give you a light on that. So यहाँ तक अगर किसी का कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. सर डेटा इंटीग्रेशन का थोड़ा बताएंगे. और डाटा इंटीग्रेशन में ऐसा है कि सपोज मैं आपको एप्लीकेशन कुछ एग्जाम्पल कुछ एप्लीकेशन दे के ट्राई कर रहा हूँ समझाने के लिए, सो दैट आपको वो याद रहेगा. ठीक है, जैसे अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिसीजन मेकर हूँ. सपोज आई एम ए डायरेक्टर ऑफ ए लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट का मैं डायरेक्टर हूँ. ठीक है, तो मुझे एक साइक्लोन आ रहा है. ठीक है, आप बताइए कि आपको क्या क्या मतलब डेटा आपको रिक्वायर्ड हो सकता है. आप खुद सोचिए, यू जस्ट थिंक दैट यू आर ए लाइक यू आर ए एडमिनिस्ट्रेटर और यू आर ए कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट. ओके, एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का आप कलेक्टर हो और आपको पता है कि आफ्टर 7 days आपका जो एरिया है वहाँ साइक्लोन होने वाला है, साइक्लोन आके लैंडफॉल होने वाला है. तो क्या क्या डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा आप बताइए. फिर आपका जो क्वेश्चन है ना, दैट क्वेश्चन विल बी आंसर कि डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है. आप पहले बताइए मुझे क्या क्या आपको डाटा रिक्वायर्ड हो सकता है. अरे बोलो ना, मतलब क्या क्या आपको डाटा रिक्वायर्ड हो सकता है. सर आप थोड़ा बता दीजिए. नहीं आप बताओ ना, ऐसे थोड़ी होता है. दास गुप्ता, ट्राई तो करो यार, कुछ तो बोलो. क्यों बता रहा हूँ ना, आप अगर बोलोगे ना, उसको अगर मैं रिलेट कर दूं तो आप उसको भूलोगे नहीं. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. मैं बोलूंगा तो वो आपका ये कान में आके वो कान में चला जाएगा. हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कुछ भी माइंड में कुछ भी आ रहा है आप बता सकते हो. सर कितना डिस्टरबेंस साइक्लोन क्रिएट करेगा वैसा कुछ? नहीं, वो तो एक डाटा है. और क्या मतलब आपको डाटा मतलब रिक्वायर्ड हो सकता है आपका जो, जैसे देखो आप यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल ना? यस सर. ओके, आपका वेस्ट बंगाल से कौन सा आपका ये है, मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुछ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है या कोस्टल नहीं है? सर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट. कोस्टल ही है ना? कौन सा है डिस्ट्रिक्ट बताओ. हम भी हमारा पड़ोसी हो ना आप, तो हम जानते हैं थोड़ा बहुत. मेदिनीपुर ना?
इसमें Yes, से sir. निकल। तो अभी जैसे आईएमडी बोलता है या फिर अलग बोलता है कि भाई आपका ये डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है, साइक्लोन यहाँ पे लैंडफॉल होने वाला है, ये तो आप देखे होंगे, न्यूज में सुने होंगे, ठीक है। तो आपको क्या ऐसा है कि जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी ब्लॉक, ये रिक्वायर्ड है या नहीं, बताओ कितना आपका डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक है, ये जरूरी है या नहीं? Yes, sir. जरूरी है। अच्छा, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में सपोज 5 ब्लॉक है, ठीक है, 5 ब्लॉक में कितना जीपी है, रिक्वायर्ड है या नहीं? वो भी है। तो जीपी के बाद कितना विलेज है, ये Yes, sir. इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है, आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है ये सब, ठीक है, अप टू विलेज, ये एक पैरामीटर है। सेकंड क्या है, जो विलेज है, विलेज का एरिया कितना है, आपको वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, 2 चीज हो गया। थर्ड में क्या है कि वहाँ जो पॉपुलेशन है, कितने पॉपुलेशन है ना, आपका जो कोस्ट को लग के द विलेजेस आर देयर, सपोज टोटल 50 villages are there, those are very like close to the coast को लग के है वो, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। फिर क्या है, वो जो लोग हैं वहां से Excuse me, sir. हाँ बोलो एंड्रयू। हेलो, यस एंड्रयू, यू वुड लाइक टू Sir, से please समथिंग? explain in English. ओके, श्योर। एक्चुअली Sir, please हम्म, explain in English. So I can't understand, sir. हाँ, नो इशू, no issue. Thing is that suppose your village is very close to the coast, okay, so as it is very close to the coast, so whether you need to have the elevation data, whether that village it is in a like higher altitude region or it is in a low lying area. So now we talked about 4 parameters. Beside that, whether that particular region or that particular village, it is having some like vegetation cover is there or not, or whether it is a highland area or whether it is a low lying area, or how many rivers are there. So Mr. Dasgupta, what I would like to say ki these are different data, and these different data it belongs to different department. All these data you cannot have in a single person, okay. So you need to get those data from different sources, and you want to integrate those data, you have to combine those data. You are having the land use land cover of that area, you have the infrastructure layers, like whether roads are there, whether some like railways are there, okay. So and also you need to some the asset information, like whether some sorts of like colleges are there, education schools are there, and some Anganwadi centers are there, and hospitals are there. So all the things are whether there is a connectivity of like electricity is there or not, or about the cellular service are there or not. So we are integrating different type of uh, information in a single platform, okay. Now I think you understood ki how we can integrate and what are the application of integration. Yes, sir. Did you understood now? Okay, then Mr. Andrews, whether it is clear or you would like to add something? Hello. Hello, Mr. Andrews. Yes, sir, clear, sir. Thank you. Yeah, it's okay, na? Okay. So now, Yes, sir. Clear, yeah. sir. Okay. So now we'll move Okay, to, sir. Thank you. yeah. So now we'll move towards the second part of our discussion. So here actually the basics of geospatial technology. Actually, before that, actually, we were talking about mostly about the geoinformatics, like remote sensing, all the things. But now, from this slide onwards, we will be concentrating on geospatial technology, because see, as I was telling ki based on your syllabus only we will try to go. So in your syllabus actually the second I think it is after recent trend, uh, just a minute.
Yeah. So some like different what is geospatial science and what are the different data sets are there, and different type of modelings are there. So we will be talking about those things. So before that, uh, like geoinformatics, actually this slide should come in the first or second slides, but why I kept here, because now we will be talking about more on GIS. That's why I have kept here only. So in geo it's all about earth, and informatics is about the earth, and we are having the information, and we are studying the different information, and also we are processing that. So in geoinformation, what I can define it like, it is a art, science, and technology that deals with the acquisition of data, then how to store that data, how to process those information, then what type of production is there, and how to present those data, or how to visualize those data. And also the very important is that dissemination of geoinformation. See, uh, thing is that suppose we all are the expertise, we are having the expertise in like in geoinformatics, and we are doing in our lab, by sitting in our lab we are doing all the things, but until and unless those information is not going to be disseminated, or it is not reaching to the end user. Suppose for example, a person who is staying in a uh, coastal village, if the warning information, suppose the tsunami warning, or some flood information, or some like cyclone warning are there, so if that is not reaching to the end user, then I don't think there is a utility of using this technology of remote sensing and GIS. So in geoinformatics, what I can compile it like, here we are acquiring the information, storing information, processing the information, then finally we are visualizing, and also we are disseminating the information to the end user or the common public. Okay. So Andrew, I would like to listen from you. Ki, uh, just tell me about yourself, and how by using this geospatial science, how you can think that it can be used by the public user, or it can be used by a very common man. I would like to listen some example from you. Yes. Yeah, Mr. Andrews, are you there? Hello. Yes, sir. Hmm. Yes, sir. Yeah, I would like to listen from you. Hello, sir. Am I audible? Yeah, you're audible, please. Yes, sir. Tell me, sir. I was asking, ki, just give The me, common man using. Yes, sir. how? Just give me an example. How a common man is now using the geospatial In science. common man using geospatial means maybe the Google map is there. Yeah, that is one example. Oh, sorry. Or some other example. Google Maps and This Zomato, other example is whether it is there or not, whether we are using that. This mhm. Ola, Uber, in Ola, Yeah, it's a Uber. Zomato. Zomato have some location. Yeah, location means that is coordinate, na? So Yeah, yes, sir. definitely, unknowingly also people are using that. Suppose Yeah. a person is having a smartphone, and he knows how to order a particular dish. Okay, so in that case, he it is not mandatory that he knows about GIS, but unknowingly he is using that, na? That's why, see, sometimes you might have received some messages from like uh, like different government, from state government, and also from central government also. Sometimes you might have received some like notification, or some sorts of message that it is going to be ran,
or some sorts of warning. आप लोग कभी whether you have received some that kind of message ever? Anyone, have you received such message? Mr. Sumit Narayan, are you there? Yes, sir. Whether you have received any message in your mobile from government that it is going to be there, like suppose cyclone aane wala hai, suppose cyclone is coming, or like that, any type of warning message, have you received ever? No. Yes, sir. Message regarding cyber crime I have received. Neither. Whatever, कुछ भी हो सकता है, whatever it may be, anything. Why I am giving this example? Because what happened nowadays, location based services. cyclone alert. Yes, right, absolutely right, cyclone alert. So सर के हाँ रिगार्डिंग भी आता है सर मैसेज, दिल्ली में हाँ तो आया था अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। हाँ, अभी क्या होता है, व्हाट हैपन कि द एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड इन आवर ऑफिस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NIDM, National Institute of Disaster Management, what we are doing now, for some trial, actually for some trial purpose, and how it is actually how it is functioning, uh, trial basis actually, NDMA also doing that. Ki suppose uh, suppose cyclone, for cyclone we are having the time of like 7 days, 8 days before also, we can know that cyclone is going to happen. But see, for example, if in the case of tsunami, okay, tsunami, you will be having a peak time of or sorry, the leap time of like 4 hours or 5 hours time is there. Suppose the uh, uh, earthquake is occurred like in Sumatra area or somewhere, then in that 4 hours of time, we need to evacuate the people, those who are staying in along the coast. So it is a very big challenge. Na? If at that time, suppose we can disseminate the information to the end user that please vacate your area because you are going to have the tsunami after 3 hours or 4 hours. So in that time, we know, see how the JS will be useful. See, suppose for example, the tsunami is going to hit the Odisha coast or for Kerala coast, for example, in Western India, okay, in Western coast, and here actually for example in Odisha coast. So we don't need to send the message. If it is going to hit Odisha, then we don't need to alert the people of like Kerala or in Mumbai. We don't need that. Na? For that, actually, we need to send to that particular area. So in that case, location-based service is there. Okay. So based on the location, actually, we can send the message or alert can be sent to the targeted audience or targeted people. Okay. So then, see, this is a very interesting slide. We live in two worlds, I can say. That in left hand side you can see that is natural, and in right hand side that is man-made. Okay. Then uh, in left side, in natural, it is actually self-regulated. No one is going to regulate them. But in the right side, in man-made, actually, what happened? We are managing it. Okay, so they are increasingly in conflict. बहुत सारा conflict होता है. Why I have given this particular slide? You will be knowing in the next slide actually. See, ये जो slide है next में, ये देखिए. So we live in a changing world nowadays. Suppose 50 years back, there was a jungle area, a forest was covered, but in course of time, there is a degradation. We are cutting the trees, and that area is now it is converting into a it is a, like deforestation is there.
So the habitats are there, the biodiversity, all the things are destroyed, and there is a increase in population. Urbanization is growing very highly. So there is a conflict of human conflict is there. Then environmental changes are there. The climate change is there. So these things are increasingly very rapidly, and now the population is also very increasing. So thing is that in the next slide you can see that we have a limited resources. Okay, in this slide you can see we have a limited resources, and to meet these challenges हमारा जो overcrowded population है, and also the limited resources are there. So ये जो all things है ना, we need to meet this challenge. We need to monitor our resources very widely. We need to have better ways to represent the whatever is there in the earth surface. Then we can understand that, we can manage that, we can communicate that. So in that case actually the geoinformatics plays a very vital role. Like we can measure the we can measure it, we can monitor it. How we can monitor it? Like whether a forest is decreasing, or whether there is a afforestation, or whether there is a degradation. These things can be monitored. Then we can have different type of planning, we can plan it. Then we can take a decision. Like what type of decision? Suppose we know that in this particular village or this particular area it is going to be hit by a cyclone, or it is going to be flooded soon. So in that case we can take a decision to evacuate the people from there. So this is all about the use of geoinformatics in a very wide way. Okay, then in this is in this slide actually it tells a lot. Here geoinformatics is emerging as a new language to understand our world. ये जो स्लाइड है ना, आपको आप अगर इसको देखोगे, लाइक देयर इज ए like complex data modeling is there. Then information is there. That information is processed through a tool like GIS software is there. Then uh, we are going to have the information. Then we can do a lot of modeling. Then we can visualize those information. Then see in the here in the integration part we can integrate different data. It may be a point data, it may be a line data, or it may be a polygon data. So these point, line, polygons, these all type of data can be integrated. Okay, then one question can come to our mind: why we are using GIS? What is the reason for that? Here question answer is that we can generate the data, we can assemble data, we can store, analyze, and we can visualize or display the data set. Then in this slide you can see that like convergence of different type of theme, like remote sensing is there, demography, the study about the population, geology, geography, engineering, ecology, hydrology, environmental science, atmospheric science. All these things can are converged in GIS. Okay, then जो स्पेशल डाटा इसको छोड़ देते हैं, ये देखिए इस अच्छा, एनीवन कैन यू टेल मी कि व्हाट आर द लाइक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जेएस, कि मतलब हाउ डू वी रिप्रेजेंट आवर डेटा, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द डाटा इन जेएस? एनीवन कैन यू एक्सप्लेन? No. Whether we can represent our data through point, line, or polygon or not? Point, line, and polygon, ये तीन में तो we represent our data set ना. No,
There is no answer from the audience. Okay. Okay. As earlier I was talking about the different data set, like raster data are there. Raster data, like any image, that is an example of raster data. And in raster data, actually, there is a grid of cells, then each containing a value, whatever cell is there, whatever pixel is there, and what is a image. An image में pixel होता है, and what is a pixel? Pixel is a very, it is smallest unit of an image. Then it can be your any satellite image is a very good example of raster data set. Then in vector we are having point, lines, and polygon. These features are defined by their coordinates, and shapefile is the best example of, I can say, the vector data. Then spatial data sources. What are the sources for spatial data? Obviously, satellite imagery, aerial photography, GPS data, field survey, and also if you are having some existing data set, that can be also one sources. Then spatial data acquisition, how we are acquiring the spatial data. We have to plan कि this is my area, and in this area I would like to go for there, and for that we need to have a planning. Then data collection, different type of methods are there, like aerial photograph, GPS survey, field measurement, and so many are there. By using that you can collect the data, then we can process the data, we can analyze the data. Then those different type of data can be integrated. Then we can manage the data. So some important aspect of managing the data set are like data storage, data quality control, you need to control that, data security, then obviously metadata, that is data about data, and we need to have some backup and recovery. Then spatial data analysis tools. What are the different tools? You can use ArcGIS, QGIS, GraphGIS, Google Earth Engine. So many tools are there that can be used, and for obviously your spatial analysis, data visualization, modeling, and simulation all. Then here you can see some example of like data visualization. In left hand side you can see a choropleth map is there, then a point map is there, and topographic map are there. So different ways of representing the data, that is in data visualization. Then geospatial data analysis, how actually we do the analysis. Like suppose we are having a problem, an issue is there, then for that actually we need to plan how to analyze those, how to solve that issue. For that we need to go for the data acquisition. Data agar mil gaya, then I will go for the data processing. In that I have to go for the, I have to clean the data, I have to transform the data in terms of projection and all. Then then I will go for the analysis of data. Then visualization, data needs to be visualized through different ways, like maps, charts, and visualization also done by different ways. Then interpretation and conclusion. So by doing all the things we can conclude to a point that this is the way and this is the conclusion, or this is the in this way actually we can take a decision. So this is all about today lecture, and anyone if you have any query, then I'll be happy to answer. And if you are not active, you are not interested to listen, then also I have nothing to say, because see you all are professional, it is understood, but आप लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है. तो वो मतलब one way I think you can understand, if we are giving effort, then from your side also we are expecting ki it should be like interactive in nature, so that it will be good. Otherwise just we can prepare some slide and I can just go on reading. That is also, that can be done, but उसमें कुछ useful नहीं होगा.
So anyone you would like to say something? हेलो, हेलो सर। या आपको कुछ कहना है क्या? सर ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात है सब यही यही टाइम होता है हमारा भी मतलब ऑफिस छोड़ने का, फिर हमारा ट्रांजिट का टाइम रहता है, तो हम्म। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा वो होता है। अदरवाइज हम एक्टिव हैं सर, आप जो बताएंगे हम सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरा ध्यान है हमारा। नहीं तो एक काम करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं टाइम को, और जैसे 6:30 ऐसा कुछ करते हैं तो शायद अच्छा रहेगा, या फिर तो 6 बजे करते हैं। सर ये देखिए सर, ये तो सबका सबके साथ होगा, क्योंकि मेरे अकेले से तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी हम्म। तो पता, तो ऐसा ना हो कि मेरी वजह से अगर ये चेंज नहीं हो नहीं और नहीं, आपकी वजह से मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि अगर सी इग्नोर दे आर रिक्वेस्टिंग मी टेक द क्लासेस, तो बट थिंग इज दैट अगर थोड़ा ये नहीं रहता है ना तो मन नहीं लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगता है और पढ़ने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा खुद का प्रिंसिपल है। समझ रहे तो हैं सर, वन साइड चल रहा है तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं बनता। हाँ, तो ऐसा है, अदरवाइज आई विल क्विट, मुझे वो ये नहीं है, तो फिर बाकी जो देखा जाएगा। बट अगर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम को, अलग अगर सबका अगर कुछ बनता है लाइक 7 PM या फिर 6:30 ऐसा कर सकते हैं। 6:30 to 7:30 सर मैं प्रेफर करूंगा, मतलब मैं उस टाइम पे टोटली फ्री हो जाता हूँ। तो बाकी सबसे भी पूछ लीजिए, अगर कोई रिस्पॉन्स करता है तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना सर, ऐसा ना हम्म, हो नहीं दूसरों को। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज आई विल टॉक विद द इग्नो पर्सन ऑल्सो, ओके सर। बिकॉज ऐसा हो सकता है ना, सोम पर्सन उनको लगे कि भाई 5:30 to 6:30 अच्छा है, और कोई बोले कि सर 3 से 5 बजे अच्छा है, कोई बोल हाँ, सकता है कि 6 से 8 है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो सर मैं कि आप म्यूचुअली करवाना चाहते हैं, आप अपने आपको जो टाइम सूट करेगा आप उस हिसाब से करिए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, 5 से 7 तो मेरे लिए अच्छा है, बट थिंग ये है ना कि अगर अटेंटिव नहीं लगता है ना यार, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए क्योंकि देखिए हम भी जो स्लाइड बना रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, 1-2 घंटे बात कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम अगर होता है तो क्या है कि स्टूडेंट का उनका भी कुछ बेनिफिट हो, ये सोच के। अदरवाइज बहुत ऐसा भी होता है कि आके बस रीडिंग मार के चले जाते हैं, तो दैट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एक्चुअली। तो बेनिफिशियल तो फिर चलो ठीक है, और किसी का कुछ नहीं। सर मैं तो बिगिनर हूँ तो ज्यादा जानता नहीं, इसलिए मैं मतलब ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं इंटरेक्ट नहीं, और। अरे देखिए अभी आप सोचो, मैं ये मेरे ओर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पूछो, ये करो, क्योंकि इसमें आप लोगों का भला ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और नहीं तो देखिए मैं तो ऑफिस, मतलब जो नहीं समझ रहा हूँ वो तो पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि ऑफिस के टाइम को बाद फिर भी टाइम निकाल के ये क्लास लेना, ये भी मतलब छोटा ये नहीं है, क्योंकि हाँ सर समझ रहा हूँ, तो डिफिकल्ट है। तो ऐसे भी मतलब अभी देखिए आपका क्लास खत्म होते होते फिर ये ट्रैफिक बढ़ जाता है ना ऐसे टाइम में, शाम के टाइम यस। में, तो फिर घर जाते जाते बहुत टाइम लगता है, तो ये सब चीज़ भी है। तो एज यू ऑल आर लाइक प्रोफेशनल, तो आप लोग समझ सकते हो। नहीं सर, मेरा तो मतलब इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उतना नहीं मतलब कोई पूछ। नहीं, वो तो देखो जैसे हमारा मास्टर डिग्री स्टार्ट किए थे तो हम भी ऐसे ही थे, आप जैसे ही थे, तो वो नहीं है, वो धीरे धीरे होता है। लेट्स, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं 2-4 दिन क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन। थैंक यू एंड सर। मैं कुछ थैंक आज स्लाइड भी मैं दे देता हूँ, और आपको कुछ बुक्स वगैरह, जैसे कल मैं बोला था, कुछ बुक्स मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।